ਕਰੋਨਾ ਘਟੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। खुद मुख्यमंत्री ने रिपोर्टां दा हवाला दे के आंकड़ियां नूं डराउण वाला करार दिता है, क्योंकि आउण वाले महीनों च हालात सुखावे नहीं होणगे। So the figures are going up as and when phase 2 comes in from the initial effect. Infection that has come in, it spreads to the other people. Luckily, so far, most of the cases that have come it's been imported in from outside. But now this is likely to be phase 2, which is likely to spread, and these 27, most of them will be in that case. Well, this is a report made by the Department of Community Medicine and School of Public Health, PGI, which is PGI, Chandigarh. And it has very senior people on it. And this is, I can only read out what they have written. And I'll read it out to you again. In the CFI scenario, COVID-19 epidemic in India is estimated to reach its peak in mid-September 2020 at a point where 58% of the population has been infected. Table 3, figure 2, cumulatively. COVID-19 is likely to infect 87% of Punjab's population and other populations. Now, here are your figures. These are given by doctors. We have to accept them, and we have to prepare accordingly. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 14 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। The first two that started in Punjab was one here in Nawa Sheher, where one person came in and he infected a large number of people, and that village is still under lockdown. We've shut that village completely up. In Hoshiarpur, they were the second lot. Now, why I'm saying these areas, because these 4 districts, Nawa Sheher, Hoshiarpur, Jalandhar, and Kapurthala, are the Doaba region. And this has got the maximum number of NRIs abroad. And therefore, the maximum number of casualties and infected people are in this area. We've had to shut down a whole group of 14 villages in one place where this had developed in Hoshiarpur. So like that, this has taken us a little time. At the moment, things are under control. एक नवा शहर में जहाँ ज्ञानी जी आए थे, जो पहले लेके आए थे, वो भी हमने कट ऑफ कर दिया. And they are under total quarantine. And वहाँ भी in these hotspots हम इसकी testing करेंगे with this new test kits which are coming. And अगर उधर कोई पॉजिटिव निकलने के चांस हैं या जो मेडिकल डॉक्टर फील करते हैं कि ये जो एंटीजन टेस्ट है, दिस इज इंडिकेटिंग कि कोई ऐसी बात है, फिर ये जो 5 हमारे सेंटर्स हैं उनसे से ब्लड ड्रॉ करके और फिर उन सेंटर्स में भेजेंगे फॉर अ चेक वेदर इनका कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ है। मैं तो आप ही कह रहा हूँ कि टेस्टिंग कम हो रहा है। हमारी टेस्टिंग टोटल जो हुए हैं, वेयर आर दोस फिगर्स, इट इज जो टेस्टिंग हुआ है आउट हमारे 28 मिलियन, हमारी 2.8 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, एंड ओनली 2877 हैव बीन टेस्टेड. इट्स नथिंग. बिकॉज व्हाई? बिकॉज अभी तक तो शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया था पटियाला मेडिकल कॉलेज, अमृतसर मेडिकल कॉलेज एंड पीजीआई. उसके बाद हमने we put all the equipment together and Faridkot Medical College is also taken on board. Now लुधियाना में 2 प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी लेबोरेटरीज के लिए हमने परमिशन मांगी है, भाई परमिशन नहीं आई. एक तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड दिस इज द अदर वन इज दयानंद मेडिकल कॉलेज. तो वी आर आस्किंग फॉर परमिशन फॉर देम. अगर मिल जाए तो वहां भी शुरू होगा. नेचुरली वो प्राइवेट हैं, we will have to assist in that testing. But ये जो अभी टेस्ट किट्स परमिट किए हैं, it is a antigen testing kits. जब वो आ जाएंगी, I hope we are getting 25,000 by Monday, so we can further spread it. अब उसमें तो एंटीजन का जो रिजल्ट आता है उससे डॉक्टर फैसला करते हैं इसको कोरोना टेस्ट करना है या नहीं टेस्ट करना.
So that's there are two stages in doing this. लेकिन वो हमने कुछ ऑर्डर किए हैं. We have ordered 1 lakh also of these kits. कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लेंगे. उन्होंने 1.5 करोड़ मांगे हैं, बाहर से मंगवाए हुए हैं. So hopefully we'll get it an increase. So this is absolutely correct. It's not only in Punjab. सारे हिंदुस्तान में टेस्टिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए. ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ.